Good morning, children. I'm sure you are able to hear me and my screen is visible to you. So today we'll study about a very beautiful category of animals. They are called echinoderms. So we'll wait for some time, another 5 minutes, and then we'll start the class. Okay. If you can chat in the chat side. Okay. I am not visible because I don't. When I feel that you should always see the screen. Okay. I am sure I am audible. Abu Sangam, can you talk with me? Are you able to speak in the class? Try to say good morning. Actually क्या है, if you talk it is better. जो doubts थी वो तुम्हें directly पहुंचा परिवा. I am showing you two set of animals. So these are, they are the starfishes. Okay. And can you tell what are these? Right side रे को photo दिखाओ जी कोई परिवा. Right side रे, can you tell which animals they are? Bolo, कौन है? What are these animals? This will be taught to you in the next class by Tapan sir. Okay, so let us start the class. Fine. So we will be today studying the last, technically last non-coded phyla. କାହିଁକି actually ତା ପୂର୍ବରୁ we ମାନେ earlier what we used to do, we used to use hemichordata in chordates. तेरा आग काले आमे hemichordata को chordates रे पढुथिलु, किंतु एबे कोन होउची, एबे आमे hemichordates को कोठी पढुछ, आमे hemichordates को एबे non chordate रे पढुछ.
So that is why today we are calling phylum Echinodermata not as the most advanced non-chordate phylum. Okay? किंतु पाग जब हेमिकॉर्डेट को आम कॉर्डेट रे पढ़ुथुलु ताहले आम तम कोन कहउथुलु मो नॉन कॉर्डेट मोस्ट एडवांस फाइला के थिला दे वर द एकाइनोडर्म्स ओके नाउ एक्चुअली हमर गोटे इफ यू रिमेंबर ओके हमर जदि तमे रिमेंबर करिवो दैट हमर जो एनिमल्स they were divided into two categories. Koda gota protostomia and deuterostomia. हेगला तो प्रोटस माने कौन प्रोटस माने होची फर्स्ट प्लस स्टोमा माने कौन स्टोमा माने होची माउथ ठीक अछि तो प्रोटोस्टोमस माने कौन प्रोटोस्टोमस माने फर्स्ट माउथ तो आंकर कौन हैला तो माउथ डेवलप्स फर्स्ट माउथ डेवलप फर्स्ट तापरे ड्यूटेरस माने कौन ड्यूटेरस माने पर या आफ्टर एंड स्टोमा माने कौन तो स्टोमा माने होची माउथ तो सेइथरे एंकर कौन हुए माउथ डेवलप्स later and anus develops first ठीक अछि तो सेही पे एई जो एनिमल्स को आमे प्रिमिटिव कहउथलु these are primitive animals and these are advanced animals तो एइथरे को एग्जांपल आमे नउथलु तो एइथरु तमर पळे आसीबो कोन पॉरीफेरा रु आर्थ्रोपोडा सब जाक एठी पळे आसीबे तो एठी कोन हबो एठी आसीबे तमर एकाइनोडर्म्स चेक तापर हेमिकॉर्डेट्स हला and chordates okay so that is why in case of animalia ame dita taxon देखुतले protostomia and deuterostomia तो से पे deuterostomia को आमे advanced animals कहउथलु and एई जो deuterostomia अछि सेइथरे आजिर डिस्कशन ता रहिबो ओके जो थरे आमे पढ़िबा अबाउट एकाइनोडर्म्स हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स बुझिगला सो एटा ही आमे डिस्कस करथुरु एबे आ प्रीवियस स्लाइड रे इफ यू रिमेंबर so if you see the previous slide एथरा में कौन देखुचे so this is deuterostomia बुझिगला दिस इज ड्यूटेरोस्टोमिया सेथरे को टैक्सन पळे आसिला एकाइनोडर्माटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा बुझिगला एकाइनोडर्माटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा क्लियर तो एई जो एकाइनोडर्म्स हेले आजी आमे स्टार्ट करिबा एई फाइल तापर नेक्स्ट क्लास रे तपन सर एंड ऑल से माने स्टार्ट करिवे नेक्स्ट क्लास हैला चलो सो एटी तमे साइड रे देखुचो डायग्राम्स तो दिस इज ए तळे जो एनिमल टा हमें देखुचे तळे एनिमल टा के तळे एनिमल टा होउची सी कुकुम्बर हैला समुद्री काकुडी एंड ऊपर जो एनिमल टा देखुचो
एटा होची सी अर्चिन एंड जा ऊपर बसीची एटा होची कौन सी लिली ओके नाउ सबटू फर्स्ट एज यूजुअल जब मु भी पढ़ाए तो आई ऑलवेज डिस्कस द एनसीईआरटी पॉइंट कहना एटलीस्ट तुम जानी दियो कि एनसीईआरटी कौन कौन अच्छी तापरे आमे अलगा पढ़िबा हैला तो एनसीईआरटी रे जो पॉइंट्स गुड़ा देछि तो दीस थिंग्स आमे पढ़िबा बिफोर गोइंग देयर आई वांट टू डिस्कस अनदर कांसेप्ट दैट माने आमर जो तुम देखिबो सिमेट्री हैला सिमेट्री देखिले एडल्ट्स मानको जो तुम देखिबो स्टारफिश दे आर रेडियली सिमेट्रिकल हैला तो एडल्ट्स माने रेडियल सिमेट्रिकल तापरे किंतु प्लेसमेंट जदि हमें देखिबा प्लेसमेंट ताकू रखा है बाइलेटेरिया र क्लोज टू कॉर्डेट बुझीगला सिमेट्री देखिले से रेडियल किंतु रखा है कोठी बाइलेट्रिया रो सबुठु एडवांस पाखरे कॉर्डेट पाखरे आनी रखा हैला तो सेटार कारण कौन ओके इफ दे आर एक्चुअली रेडियली सिमेट्रिकल ताहाले तांकु कोठी रखार थिला कहि परिबा हमर रेडी अदर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स किए कहि परिबा फटाफट चैट रे कुह को जल्दी जल्दी अदर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स कोटा नो आइडिया अदर रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स कोटा कुह जल्दी जल्दी अबू संगम अर्जुन नंदिनी तो व्हाट आर दी अदर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स आमर पळे आसीबे निडारिया एंड टेनोफोरा तो बुझिला तो जदि आमर एकाइनोडर्म्स रेडियली सिमेट्रिकल थांते ताले तांकु कोठी रखिवार थिला तांकु रखिवार थिला टेनोफोरा परे एंड बिफोर फ्लैट वंस बुझलो कि नहीं कहना प्लाटी हेलमिंथेस रु तमर बायलैटरल स्टार्ट हे जाउछ हैला ताहाले ताकू एते एडवांस्ड जगह रे रखियार कारण कोन व्हाट इज द रीजन टू कीप these animals in the most advanced category हैला तो तार कारण होउची तो नंबर 1 लार्वा शो bilateral symmetry बुझिगला तो एक्चुअली जब आमे लार्वा रो स्टडी करिलु आमे जानिलु कि जो लार्वा माने से माने बायलैटरल सिमेट्री शो करन क्लियर ताहले तुम कहबो सेतले एडल्ट रेडियल काहे की हे गेले तो एडल्ट रेडियल हमारा कारण होची एडाप्टेशन एडाप्टेशन टू सेडेंटरी लाइफ हे गेला एडाप्टेशन टू सेडेंटरी लाइफ माने सी आ मोबाइल मोटिलिटी छाड़ देले तो सी मोटिलिटी छाड़ी देले जेबे से मोटिलिटी छाड़ देले से मोटिलिटी छाड़ देला पर कौन हैला तो मोटिलिटी जेबे छाड़ देले से माने फिक्स्ड हे गेले आउ बेसी चालबुल करिले नाही तो जेबे बेसी चालबुल करिले नाही तांकर रेडियल सिमेट्री को से माने अडॉप्ट करले बिकॉज़ रेडियल सिमेट्री रे कौन एडवांटेज तमर माउथ टा मझी रे रहइबो एंड आर्म्स गुडा चारियाडे रहइबो तो आमे खाद्य कलेक्ट करके खाई पारिबा understood so that is why larva show bilateral symmetry
and adults show कौन radial symmetry. ठीक अछि. So this is the concept. तो एटा हेगला हमर फर्स्ट पॉइंट. खाली गोटे कारण पे तो आमे तुमको एते पाखरे रखी परिबानी कोऑर्डिनेट्स रे. द्वितीय कारण कौन डेवलपमेंट is deuterostomas हैला. तो डेवलपमेंट होची ड्यूटेरोस्टोमस माने तांकर जो माउथ टा पर डेवलप हैला. आग डेवलप हैला कौन एनस जोटा की कॉर्डेट्स रे भी हुए. ठीक अछि. तापर थर्ड कारण कौन सिलोम is enterosilum. आ पूर्वरु जो एनिमल्स माने थिले तांकर साइजोसिलम थिला हे गला. तो सिलम होची एंटेरोसिलम. क्लियर. एंड लास्ट रे अनदर पॉइंट is mesodermal skeleton. Mesodermal skeleton or skeletal structures. बुझीगला. तो तांकर जो स्केलेटन टा मेसोडर्म रे तियारी. जदि तमे अदर कैटेगरीज देखिबो दे आर माने जो नॉन कॉर्डेट्स. तो नॉन कॉर्डेट रो स्केलेटन टा जनरली एक्टोडर्मल. कॉर्डेट रो स्केलेटन टा होची मेसोडर्मल. तो सेई पे एमाने कॉर्डेट भलिया. तो जदि हमें देखिबा डेवलपमेंट भी कॉर्डेट भलिया, सिलम भी कॉर्डेट भलिया, स्केलेटन भी कॉर्डेट भलिया एंड लार्वा तो अछि. तो से पे एई तीनोटी फीचर कॉर्डेट भलिया. तो से पे ताकू कॉर्डेट पाखरे रखा गला. एंड सिमेट्री भी बाहर जना पड़ला कि लार्वा बायलेटरल शो करछि. अंडरस्टूड. तो तमर एटा ଗୋଟେ क्वेश्चन आसीबो तमर एनुअल एग्जाम रे या हाफ इयरली एग्जाम रे कि व्हाई echinoderms are placed close to chordate even if they are radially symmetrical animals. बुझिला. तो क्वेश्चन कौन आसुची why echinoderms are placed close to chordates. बुझिला. अंडरस्टूड. तो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक अछि. तो सेटा तमे जानथिबो. तो तार कारण मु डिस्कस कर देली. तो नाउ वी विल गो टू द एनसीईआरटी पॉइंट. नाउ these animals हमें कौन देखिले. Now these animals have an endoskeleton of calcareous ossicle. देखिला. तो एंडोस्केलेटन शब्द पळे आइला. तो एंडोस्केलेटन शब्द माने कौन मेसोडर्मल स्केलेटन है ना. नॉन कॉर्डेट्स रे एक्टोडर्मल स्केलेटन है. ओके. तापरे एटा हे गेला. हेंस द नेम इज एकाइनोडर्माटा. डर्मा माने कौन स्किन हैला. तो डर्मा माने कौन. तो डर्मा माने होची स्किन. तो डर्मा माने होची कौन स्किन. ओएटा होची गोटे सफिक्स. ता माने होची बियरिंग. एंड एकाइनस. एकाइनस माने होची स्पाइन. एक्चुअली हमर एकाइनस होची सी अर्चिन. तो सी अर्चिन भलिया सेई पे ताकू हमें स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स कहू. क्लियर. ऑल आर मराइन. एतर मान रखिबो सबु जाक कैटेगरी मराइन. माने हमर जो माने एकाइनोडर्म रे को भी स्पीसीज टा फ्रेश वाटर ना. ठीक अछि. ऑल आर मराइन. तापरे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑब्वियसली तुम जानिच. तो एटा होची हाईएस्ट. तो तमरो ऑर्गन सिस्टम लेवल कोठु आरंभ हेलानी
ऑर्गन सिस्टम लेवल आरंभ हेलानी हमर नेमाटोडा रु ठीक अछि तांकर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल अछि एकाइनोडर्म्स adults are radial but larvae are bilaterally symmetric तो एक्चुअली एमाने बायलैटरल बुझिलो कि नहीं लार्वाटा बायलैटरल थिला तो एडल्ट कौन हेबा कथा एडल्ट बायलैटरल हेबा कथा किंतु से स्वेच्छा डिसाइड करले कि नहीं आमे गोटे फिक्स्ड लाइफ जीवु आमे एते चालबुल करिबु नहीं तो जेबे से डिसाइड करले कि आमे फिक्स्ड लाइफ डील करिबा ताहाले से माने अडाप्ट करले कौन रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री रे सबुठ बढ़िया कौन किंतु तुम देखुच स्टारफिश हैला तो स्टारफिश देखुच एई भला तांकर तो तांकर कौन माउथ टाइट अछि एई पांच दिगरे हाथ अछि तामाने जोठु भी खाइबा मिलिला से तामे खाई पारिबु अंडरस्टूड तो एबे बायलैटरल सिमेट्री एडवांटेज कौन से मोबाइल माने से खाद्य आड़ू को जाई पारिबे हैला किंतु एमाने तो फिक्स्ड सपोज आमे खाद्य एठू देलु तो से आड़े पळेले सपोज आमे खाद्य एठी देलु तो से आड़े पळेले सपोज आमे खाद्य एठी देलु तो से आड़े पळेले काहेकि आमे मूव करि परिबा मूव तो आमे जुआड़े खाद्य से आड़े जाई परिबा किंतु एमाने कौन एमाने तो फिक्स हो गले गछ भलिया तो जेबे एमाने फिक्स हो गले ताहाले सेमाने केमिति खाइबे तो से पे सेमाने कौन करंती चारि दिगरे हाथ रखी दियंती एंड पार्टीटा थाए मझिरे अंडरस्टूड so that is why these animals adapted to bilateral symmetry in adulthood so that they can live a sessile sedentary life ठीक अछि तो देखो एनसेट रे प्रॉब्लम कोन से जो पॉइंट दउची सब को काळार पॉइंट ट्रिप्लोब्लास्टिक एटा तो आसलानी प्लेटफॉर्म्स रु सिलोमेट सिलोमेट कहि देले चलिबनी एठी तुमको एंटेरोसिलम लेखियाम पड़िबो हैला तो एंटेरोसिलम काना सिलोमेट तो हमर आरंभ हो गेलानी कोठू सिलोमेट आरंभ हो गेलानी हमर एनालिडा रु हैला नाउ तमे जानिच तो दीज एनिमल्स दे आर ऑफ 5 टाइप्स तो हमें एनसीडी पॉइंट डिस्कस कर दो तापरे छाड़ दिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट माने माउथ भी अच्छी एंड एनस भी अच्छी तो माउथ वेंट्रल तळ पटे अच्छी एनस डॉर्सल ऊपर पटे अच्छी ठीक अछि द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकानोडर्म इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम एटा हमें डिस्कस करबा जे मु पारे तुमको ड्राइंग वाइंग देखे कि ताको डिस्कस करेगी हैला तो तांकर वाटर वास्कुलर सिस्टम ता तांकर आइडेंटिफाइंग फीचर ओके तो एई जो वाटर वास्कुलर सिस्टम कोन एटा खाद्य आनिया पई खाइबा पई लोकोमोशन पई रेस्पिरेशन पई एंड आल्सो एक्सक्रीशन पई सेल्फ करे ठीक अछि काहे कि व्हाट इज द मेन थिंग से पानी आनिबो तो पानी संगे किए आसीबो खाद्य ऑक्सीजन एंड पानी संगे किए जीव वेस्ट CO2 तो बुझिगला तो से पे पानी आनिबा और पानी छाड़िबा जो सिस्टम करे दैट इज कॉल्ड वाटर वास्कुलर सिस्टम एथर एक कंफ्यूजन एलिमेंट अछि कोन अछि कंफ्यूजन एलिमेंट कहला हमर जो परिफेरा अछन परिफेरा रे भी कैनाल सिस्टम अछि हैला तो से पे एटा तमे मन रखिबो कि कैनाल सिस्टम कोठी अछि परिफेरा रे एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम कोठी अछि तमरो एकाइनोडर्म हैला तो बहुत यदि उल्टाटा दे देथिबो त सब स्टेटमेंट देछि कि एकाइनोडर्म्स हैव कैनाल सिस्टम which is responsible for locomotion capture transfer of food respiration and excretion तो लोक देखिबारे सब तो ठीक अछि तो करके देखो करेक्ट स्टेटमेंट लिख देबे कि जेडी कोन करछि से सब जाक ठीक लिखिछि किंतु वाटर वास्कुलर जगह रे कैनाल ता भूल कर देई अंडरस्टूड चलिए
एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट तो तार स्वतंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम नाही ता जागारे से माने ट्यूब फिट टाकू या वाटर वास्को सिस्टम टाकू यूज कर हला रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड तार लार्वा थाए तो जहार लार्वा थिबो ता डेवलपमेंट को हमें कौन लिखिबा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ठीक अछि तो एतिके एनसेट रे देइछि हमें ताकू आउ टिके डिटेल रे देखि चलो सो नाउ वी विल डिस्कस तो दिस इज द कांसेप्ट ओके तो विथ दिस चैप्टर वी बिगिन द डिस्कशन ऑफ कौन ड्यूटेरोस्टोमिया जेमति तुमको फर्स्ट रे मु डिस्कस करली आमे एबे डिस्कस करिवा कौन ड्यूटेरोस्टोमिया एथरे के अछि एकाइनोडर्माटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा ठीक अछि एंड about 60,000 described living species ठीक अछि तो हमर ड्यूटेरोस्टोमिया रे 60,000 लिविंग स्पीसीज अछंती एंड 10,500 आर इनवर्टिब्रेट्स माने कौन ताकर वर्टिब्रल कॉलम नाही ठीक अछि नाउ अब इन केस ऑफ एकाइनोडर्म्स हमें डिस्कस करिवा केतेटा लिविंग स्पीसीज अछि 7,000 which is according to 2021 डाटा हला 2021 रे 7,000 लिविंग स्पीसीज अछंती एंड पाका पाकी 15,000 एक्सटिंक्ट स्पीसीज अछंती फॉसिल्स रे एंड एकाइनोडर्म्स बहुत सुंदर फॉसिल्स अछि आज तुमको मु देखै हला तो एई जो 7,000 रे 1,800 अछंती स्टारफिशेस अराउंड 2,000 अछंती हमर ब्रिटल स्टार्स अराउंड 1,000 अछंती अर्चिन्स अराउंड 1,700 अछंती सी कुकुम्बर एंड अराउंड 600 पाका पाके अछंती सी लिली क्लियर so the name echinoderm was suggested by whom? It was suggested by Jacob Klein. ओके तो जैकब क्लाइन गोटे बहुत सुंदर बही लिखिछंती नेचुरो डिस्पोसितो एकाइनोडर्मेटम हला नेचुरो डिस्पोसितो एकाइनोडर्मेटम तो सेई थरे से एकाइनोडर्म शब्दटा को यूज करथिले तार मीनिंग कोन हम ऑलरेडी डिस्कस करि सारिचे एकाइनस माने स्पाइनी डर्मा माने स्किन ओएटा माने बियरिंग so these animals have what mesodermal spines in their skin okay so they are called spiny bodied animals ठीक अछि लिनेयस आमे ताकू रखिथिले कोन लिनेयस प्लेस द जीनस एस्टेरियस एका एटसेट्रा अंडर मलुस्का हैला से ताकू मलुस्का रखि देथिले लामार पुट देम अंडर एकाइनोडर्माटा ठीक अछि तो सेही पे तार अलग अलग प्लेसमेंट थिला हिस्ट्री रे now the name sea stars also called starfish तो एक हमरा अंकर इन एकाइनोडर्म हमरा पांच प्रकार एनिमल अछि कोटा कोटा अछंती पांच प्रकार एनिमल तो नंबर 1 अछंती स्टारफिश हला स्टारफिश तो स्टारफिश से कोन तार मोटा मोटा हाथ सब अछि एंड तार सेंट्रल डिशटा तमे जानि पारु किंतु तार भाई अछि ब्रिटल स्टार ओके आपको ब्रिटल स्टार कहती या सरपेंट स्टार कहती तो तार देखो सेंट्रल आर सेंट्रल डिश टाइट अछि एंड आर्म गुडा जणा भी पड़ुनी मोटा मोटा अछि किंतु आर आर्म गुडा कोन साप भलिया तो जेहेतु आर आर्म गुडा साप भलिया आकु सरपेंट स्टार या कोन आको हमें सरपेंट स्टार या हमारा ब्रिटल स्टार
थर्ड कैटेगरी अछंती अर्चिन्स से माने पाखा पाखी हेमिस्फेरिकल केक भलिया या कॉइन भलिया हैला दे विल बी लाइक कॉइन या सैंड डॉलर केक तापर आसी जीवो सी कुकुम्बर पूरा काकुड़ी भलिया एंड तापर गच्छ भलिया माने दे आर फिक्स्ड सो दे आर कॉल्ड सी लिली तांकु कोन कुआ जीवो स्टार फिशेस ओके एटा होचंदी ब्रिटल स्टार एटा होचंदी अर्चिन्स एंड डॉलर्स सैंड डॉलर्स तुमको देखिबो कॉइन भले पड़िछंती एमाने होचंदी के सी कुकुम्बर्स काकुड़ी भलिया एंड एटा कोन सो दैट इज सी लिली हेगला so these are the five category of animals you will find in this taxon हेला नेक्स्ट तापर हमें पढ़ेबा तार डिस्कशन रे तो एकार नाम सारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन नो अदर फाइलम एटा तुमको फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर ली एन एंडोस्केलेटन ऑफ लार्ज प्लेट्स और स्मॉल स्कैटर्ड ऑसिकल्स ठीक अछि तांकर एंडोस्केलेटन अछि ए वाटर वैस्कुलर सिस्टम अछि जोड़ा ताकू सहाय्य करे तापरे अछि पेडिसेलारिया फॉर क्लीनिंग द बॉडी एंड तापरे डर्मल ब्रैंकिया फॉर रेस्पिरेशन एंड रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट्स तो एमती एते सब जिंस तमे आउ को कैटेगरी ऑफ एनिमल्स से पाई दे आर एन एंशिएंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड दे आर फाउंड इन द कैम्ब्रियन पीरियड माने तमे हमर जो इवोल्यूशन रे देखिबो जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो कैम्ब्रियन पीरियड वाज वेरी वेरी फेमस काहे कि सेठी हमकु अमाप स्केलेटन मिलितले फॉसिल मिलितले पोस्टेज रो योर इनवर्टिब्रेट्स तो कैम्ब्रियन पीरियड रु आम पाखरे स्पेसिमेन अछि the oldest Cambrian fossil echinoderm found till date okay has some surprising features okay तो तार ना होची यांजिया हेला बाइस्कार्पा सेटा bilateral symmetrical थिला with two arms that have been interpreted as feeding appendages हेला so that is why यांजिया बाइस्कार्पा होची oldest Cambrian echinoderm. This phylum contains around 7,300 species. Okay, around 13,000 to 15,000 fossil species भी अच्छी हैला now तापरे तांकर size 1 centimeter रे centimeter ru 1 meter पाखा पाखी अच्छी some animals are also 3 meter in length हैला तो विराट बड़ा बड़ा एनिमल भी अच्छंती रिपोर्टेड ठीक अछि दे हैव नो एक्सक्रीशन माने एक्सक्रीटरी सिस्टम तांकर डेफिनाइट नाही ऑस्मो रेगुलेशन में डेफिनाइट सिस्टम नाही ओके एंड फ्रेश वाटर से माने रुहंती so there is no freshwater animal in this category however in the oceans they can be found wide depths जोठी खोजिबो ओशंस रे तमे पाइबो तो माने बेसिकली बेंथस माने कोन समुद्र रो तळे पड़ी थांती हे गेला तो सेई पे दे आर कॉल्ड बेंथस नाउ जनरली से माने फिक्स्ड या सेसाइल कहले चलिबो स्पेशली सी लिली तो पूरा गच्छ बळिया चेर गाडी की बस किंतु बाकी जो माने अछंती स्टारफिश अर्चिन ए माने बहुत बहुत स्लो आकाश हैला तो माने धीरे 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 चलो क्लियर तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ दीज एनिमल्स तापरे इन केस ऑफ एकानोडम्स तमे देखुछ एटा होची सी लिली
ଏ କଣ ସି କୁକୁମ୍ବର କାକୁଡି ଭଳିଆ ଦୁସୁଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ, ଦିସ୍ ଇଜ ସି ଆର୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରିଟଲ ଷ୍ଟାର। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ। ନାଉ ଏଣ୍ଡୋସ୍କେଲେଟନ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଛେ ଏଗୁଡା ସବୁ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କଣ, ୱାଟର ଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ, ୟା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ୍ବିଉଲାକ୍ରାଲ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ କେନାଲଟେ ଅଛି, ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ କେନାଲ। ତାପରେ ଲାଇନ ଟେ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ରେଡିଆଲ କେନାଲ। ଏଣ୍ଡ ଏଇଠି ଲ୍ୟାଟରାଲ କେନାଲ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମ୍ବିଉଲା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଇ ୱିଲ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଶୋ ୟୁ ଏ ଡାୟାଗ୍ରାମ। ତାକୁ ଡ୍ରଇଂ କରିବା, ତ वी विल गो टू another ସଫ୍ଟୱେयर ହେଲା, ତ ତାକୁ ଡ୍ରଇଂ କରିବା। So I think you are able to see the screen. Now let us draw. ହେଲା, ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କରିବା କଣ, ଆମ୍ବୁଲାକ୍ରାଲ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଏଇଥିରେ ତମର ଗୋଟେ ଏମିତି ରିଙ୍ଗ କେନାଲଟେ ଥିବ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ କେନାଲ ଥିବ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟରାଲ କେନାଲ ଥିବ, ଏ କଣ ରେଡିଆଲ କେନାଲ। ତ ରେଡିଆଲ କେନାଲ ପୁରା ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଦେଖୁଛ ଏଟା ହଉଛି ତମର ରେଡିଆଲ କେନାଲ। ତାପରେ ଏଇ ରେଡିଆଲ କେନାଲ ରେ ଆମର ସାଇଡ ଆଡକୁ କେନାଲ ଫିଟୁଛି, ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ହ୍ୱାଟ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଲାଟରାଲ କେନାଲ। ଓକେ, ରେଡି, ନାଓ ଏଇ ଲାଟରାଲ କେନାଲ ରେ ତମର କଣ ଥାଏ, ଟ୍ୟୁବ ଫିଟ୍। ତ ଟ୍ୟୁବ ଫିଟ୍ ଗୁଡା ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲିକି ଥିବ। ଓକେ, so this will look something like this. ଓକେ, ତ ଏଇତ ଗୋଟେ swollen part ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମ୍ପୁଲା କୁହାଯିବ, and ଏଟା ହଉଛି ତାର ସକିଂ ଭଳିଆ part। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କରିପାରିବା, and so ଠିକ ଅଛି, ତ you can draw like this again here. Okay, so we can draw these things here. Fine, ବୁଝିଗଲା। ନାଉ ତାପରେ ତାର ମଝିରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟାଇଡମ୍ୟାନ୍ସ ବଡି ଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ରିଙ୍ଗ କେନାଲ, ଏଇଠି ତମର ଟାଇଡମ୍ୟାନ୍ସ ବଡିଜ ଥିବ। ଓକେ, ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଟାଇଡମ୍ୟାନ୍ସ ବଡିଜ। ଫାଇନ, ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ତମର ରିଙ୍ଗ କେନାଲ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫନେଲ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟେ ବାହାରିବ। So this structure is called what? Madreporite. And ସେଇ ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କେନାଲସ ଥିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କେନାଲ ତା ଭିତରେ ଥିବେ। ଓକେ, ସୋ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ କଣ, ରିଙ୍ଗ କେନାଲ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ, ରେଡିଆଲ କେନାଲ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ, lateral canal ହେଲା, so this is called lateral canal।
तापरे एवडा सब कौन एवडा होची ट्यूब फीट ट्यूब फीट रो सोलन पार्ट को हमें कौन कहूचु सोलन पार्ट को कहूचु एम्प्यूला एंड तळे मुहटा को कौन कुआ जाए सकर हैला तापरे एई जो रिंग कैनाल रे तमर अछि ताकू कौन कुआ जीवो टाइडमैन्स बॉडीज आर फंक्शन किसी जଣା नहीं एई जो फनल लाइक स्ट्रक्चर अछि ता कौन कुआ जीवो मैड्रे पोराइट एंड से भीतर छोट छोट कैनाल उडा अछि ता कौन कुआ जीवो स्टोन कैनाल हैला so I'm sure you can see that beautiful diagram तो जदि हमको पानी शोषिबार अछि हैला सपोज ताकू माटी को भिडिक धरियार अछि से कौन करिवो से पानी टाकू शोषिबो तो शोषिया पे हेले पानीटा को आडू आसीबो पानीटा आसीबो को आडू तो पानीटा आसीबो तमर ओके तो पानीटा हमर को आडू आसीबो को फटाफट तो पानीटा आसीबो हमर को आडू यस एनीबॉडी इज टेलिंग ना तो आमर पानी आसुची को आडू पानी आसीबो तमर मैड्रेपोराइट रु ना तळु चलो तो एक्चुअली इन दैट केस व्हेन वी विल सक तो जेबे हमें पानी टाकू सक करिवा तो सेबे पानीटा आसीबो को पटू इट विल कम फ्रॉम ट्यूब पिट सेठू कुआड आसीबो लैटरल कैनाल सेठू कुआड आसीबो रेडियल कैनाल सेठू कुआड आसीबो रिंग कैनाल सेठी कुआड आसीबो स्टोन कैनाल सेठी कुआड आसीबो आउटसाइड तो स्टोन कैनाल टा कोठी अछि स्टोन कैनाल टा अछि हमर मैड्रेपोराइट हेला तो सेबे ट्यूब फीट रो लैटरल रेडियल एटसेट्रा एटा होछि ड्यूरिंग सक्शन हैला तो जब से पानी को सक करथुबो तो तळु पानी टा ऊपर आड़ को आसी बट सपोज ताकू उड़ीबार अछि या चालीबार अछि या गो अप ओके तो से जे गो अप करा पे चाहिबो सेबे से ऊपर तळु को पानी भिड़िबो माने स्टोन कैनाल रो आसीबो कोठी की तमर रिंग कैनाल रो आसीबो कोठी की रेडियल कैनाल रेडियल रो आसीबो कोठी की लैटरल कैनाल तापर जीवो ट्यूब तापर जीवो आउट ठीक अछि तो से पे एई जो वाटर वास्कुलर सिस्टम ताकू से माने सक करिया पे भी यूज करि पारंती एंड तमर पुश करिया पे भी यूज करि पारंती तो से पे दे यूज दिस सिस्टम ड्यूरिंग लोकोमोशन किछ गोटे जिंस को धरिबार अछि तो से सक करिवो छाड़ीबार अछि ये पुश करिवो हेगला तो से पे तार अलग अलग फंक्शन अछि तो जदि पानी जीवा आसिया करूची तो रेस्पिरेशन रे भी सहायता करिवो एक्सक्रीशन रे भी सहायता करिवो खाद्य आनिबो भी एंड अलिया नै कि फोपाडिबो understood so that is why what is the function of umbilical system the umbilical system ର function कौन तो तार function होची what तार function होची respiration locomotion circulation and excretion हैला चलो तापरे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करिवा कौन
देखो एटा होछि ड्राइंग टा मु देखैतली एडा ताकू जो ट्यूब फिट रा देखछो ठिया कि अछंती ओडा हैला तो अलग अलग व्यूज रे तुम देखाइछि तो देखो केते सुंदर फॉसिल so this photograph is a fossilized what echinoderm हैला तो एई जो तुमको echinoderm देखाइछि एवडा होचंती फॉसिल्स गुडा ठीक अछि एडा सब लिली सी लिली so these are all fossil crinoidea हैला चलो तो एबे एटा भी अनदर फॉसिल्स देखैछि तो these are brittle stars ठीक अछि दे आर फॉसिलाइज्ड ब्रिटल स्टार ठीक है नाउ ता बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस करिबा तो बॉडी स्ट्रक्चर कौन तो आंकर जो रेडियल सिमेट्री शो हुए तो प्लीज रिमेंबर एटा सब बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट उडा हैला तो निडारिया Yeah. एंड टेनोफोरा हैला निडारिया एंड टेनोफोरा रे को बळे रेडियल सिमेट्री शो करा जाए टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री ହେଇଗଲା टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री किंतु एकाइनोडर्म्स रे कौन हुए एकाइनोडर्माटा रे हबो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एडा मन रखिबो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट तो सपोज गोटे थर आमर क्वेश्चन गत वर्ष क्वेश्चन आसथिला हाइड्रा रे केतेटा टेंटाकल अछि तो लिसन तो घोषिबा ना कोन तो सेही पई बिकॉज़ देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रा तो को हाइड्रा के जानिछ तो सेही पे सबबड़ मन रखिबो से एक्चुअली देखिया चाहूची तमे हे कांसेप्ट ता जानिछ कि नै तो केतेटा टेंटाकल अछि माने कोन तार 4 into थिबो मल्टीपल्स ऑफ 4 सही भलिया एकाइनोडर्म्स सब जिंस मल्टीपल्स ऑफ कोन थिबे 5 तेबे तमे देखिबो जो स्टार फिश तार जनरली केतरा आर्म अछि 5टा ओके तो सही पे दैट इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट यू हैव टू रिमेंबर हला बॉडी रे सेगमेंटेशन नाही तो दे आर अनसेगमेंटेड ठीक अछि शेप हमें देखितले दे मे बी स्टार लाइक स्नेक लाइक स्फेरिकल प्लांट लाइक डिस्क शेप या एलोंगेट स्टार लाइक के स्टारफिश स्फेरिकल के अर्चिन स्नेक लाइक के ब्रिटल स्टार प्लांट लाइक के सी लिली डिस्क लाइक के सैंड डॉलर एंड तमर एलोंगेट किए एलोंगेट होची सी कुकुम्बर ठीक अछि सेफलाइजेशन माने तांकर मुंड अछि कि ना तो दे डोंट हैव ए डेफिनाइट हेड ठीक अछि तो से पे हमें कौन कहबा सेफलाइजेशन इज एब्सेंट अंडरस्टूड तांकर डेफिनाइट हेड ना now body has 5 symmetrical ambulacra and interambulacra तो सुनो तो जदि आमे स्टारफिश टाकू देखिबा से किसी एई भला दुसची हैला कि नै तो एउडा को एम्ब्युलैक्रा कुआ जाय तार जो मिड लाइन टाकू जदि आमे जॉइन करिबा तार मिड लाइन टाकू जॉइन करले तो कोन कुआ जाउची एम्ब्युलैक्रा तो दीटा मिड लाइन मझी जगह कोन कुआ जीवो इंटरएम्ब्युलैक्रा तो जे तारा इन 5 एम्ब्युलैक्रा थिबो एंड 5 इंटरएम्ब्युलैक्रा क्लियर तो बुझियाला
सो एई जो मिड लाइन गुड़ा देखिला तो जो मिड लाइन रे हमर कोन अछि इट हैज रेडियल हैला तो एम्बुलेक्रा टा कोन एम्बुलेक्रा ग्रूव ताको हमें आल्सो कहबा कोन सेठी रेडियल कैनाल टा अछि तो सेई पे जो रेडियल कैनाल अछि सेई लाइन टाको कोन कुआ जीवो एम्बुलेक्रा ताहाले दीटा लाइन मझी जगह कोन कुआ जीवो इंटर एम्बुलेक्रा तो सेई पे एम्बुलेक्रा कोन सेटा रेडियल कैनाल अछि इंटर एम्बुलेक्रा कोन सेटा तमर कोन मिडिल स्पेस टा अछि तो जदि एम्बुलेक्रा पांचटा थिबो तो इंटर एम्बुलेक्रा भी कोन थिबो पांचटा थिबो क्लियर नेक्स्ट पॉइंट सिलोम एंटेरोसिलोम तेरा हमें ऑलरेडी डिस्कस कर देइछे एंटेरोसिलोम डेवलपमेंट माने कोन इट डेवलप्ड फ्रॉम एंडोडर्म हैला तो मेसोडर्म टा जदि एंडोडर्म रु तयारी हैला तो ताकू कुआ जीवो कोन एंटेरोसिलोम ठीक अछि तो दैट इज कॉल्ड एंटेरोसिलोम नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम कोन स्ट्रेट और कॉइल डिपेंड करूची जिमके हमर जो स्टारफिश सारफिश हैला ताको डाइजेस्टिव सिस्टम ता स्ट्रेट नहीं परिबो किंतु जोटा हमर सी अर्चिन हे गेला एटा बॉल भले अछि से पे तांकर कॉइल डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम पांच प्रकार रो अछि सेटा हमें डिस्कस करबा क्लासिफिकेशन करला बेलकु हैला देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैला मु लिखि दोछि कोटा कोटा तमर डर्मल ब्रैंकिया अछि हैला हमर काउंसिल रे देछि सेठी एनसेट रे सु कि देइ तापर जेनाइटल वर्षा अछि तापर क्लोआकल रेस्पिरेटरी ट्री अछि क्लोआकल रेस्पिरेटरी ट्री तापर अछि तमर कोन पेरिस्टोमियल गिल्स अछि एंड लास्टली ट्यूब तो तांकर कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन अछि माने पर्टिकुलर क्लास रे पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन सेटा मु जो टैक्सोनॉमी करबा सेठी हमें डिस्कस कर तांकर डेफिनाइट सर्कुलेटरी सिस्टम तो नाही सेई पे मिसी मिसी की काम करती मोइन काम वाटर वास्कुलर सिस्टम करे एंड हिमल सिस्टम टा बहुत कम काम करे ठीक अछि तो तांकर मेन सर्कुलेशन कामडा करे के वाटर वास्कुलर सिस्टम एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम होची कैरेक्टरिस्टिक फीचर माने कोन सेटा आउ को फाइलम रे सुनिबो नाही जदि पचारा हैला एम्बुलेक्रल सिस्टम कोठी मिले आखि बुझी के एकानोडम्स कहइबो कहना देयर इज नो कंट्रोवर्सी एट ऑल ठीक अछि सो दिस इज द तो तापरे आमे एठी डिस्कस करूचे तो ब्लड ब्लड ऑफ एकानोडम इज आल्सो रेड इन कलर सेथरे एकाइनोक्रोम पिगमेंट है हैला मन रखिबो तो एकाइनोक्रोम पिगमेंट थिबो जार रंग भी रेड तापरे नो एक्सक्रीटरी सिस्टम एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट माने तमरो जदी टैक्सोनॉमी देखिबो नीट वीट रे सी ताले कोन हबो सेतर से माने टेबल को माने फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिख देबे तो सेट लिखि देबे एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट तो तमे यदि जान नथिबो सेटा भूल कर देबो तो सब बेले जाना दैट इज कॉल्ड देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम सेई पे से ट्यूब फिट रो सहाय्य दे ठीक अछि स्केलेटन इज कैल्केरियस थाए ओके कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा तयारी है कि थी ठीक अछि नर्वस सिस्टम इज विदाउट ए ब्रेन जागा कहीं तो फ्लैट साप भलिया हैला सेबे नर्वस सिस्टम पे जागा नाही
ओके ब्रेन पे जगह नहीं बहुत पुअरली डेवलप्ड ओके सेंस ऑर्गन्स आर आल्सो वेरी पुअरली डेवलप्ड काई कहला व्हाई कैन इट गेस व्हाई तो से माने अंधार रे रुहंती तो तळे समुद्र तळे केबे लाइट थिबो समझ में आया तो when they are placed under the ocean माने से समुद्र र सरफेस रे अछंती तळे so they are benthos तो से पे कोन हुए तांकर सेठी लाइट न थाए ता माने फोटो रिसेप्शन र किसी दरकार नाही सेकंड कथा तांकर पानी रे माने कोन तांकर बेसिकली कीमो रिसेप्टर गुडा थिबो से पानी टा टे स्मेल करिवे खाद्य पे हैला कोडा खाई हबो कोडा खाई हबोनी तो तांकर मेन सेंस ऑर्गन होची कोन स्मेल हैला डायोसियस एनिमल माने मेल फीमेल अलगा थांती एंड ताकर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुए माने मेल कौन करिवो समुद्र रे स्पर्म ढाल देबो फीमेल अंडा समुद्र ढाल देबे से माने सेठी मिसिबे मिसिकी से माने कौन दे विल प्रोड्यूस ए बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा एंड ए जो लार्वाटा से फ्री स्विमिंग से चारिआडे बुलाबुली करके तापरे अल्टीमेटली से सेटल करी हला तो लार्वा भी तांकर कैरेक्टरिस्टिक क्लास वाइज अछि तो सेटा हमें डिस्कस करिबा अनदर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स कौन कहला पावर ऑफ रीजेनरेशन ठीक अछि तमे कौन करिवो गोटे स्टारफिश टाकू पांचटा खंड कर दबो बुझिला स्टारफिश को काटिके पांचटा पीस कर दबो आ फोपाड़ दबो तो ईच पीस विल प्रोड्यूस द होल स्टारफिश बुझिला तो एई वाले रीजनरेशन को कौन कुआ जाए मॉर्फोलैक्सिस टाइप हैला सो दे शो मॉर्फोलैक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन क्लियर नेक्स्ट पॉइंट तापरे आमर जो सी कुकुम्बर अछि सी तो धीरे 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 चालुथिबो हेगला तो जेबे ताकू किए प्रीडेटर अटैक करे हैला सपोज ताकू किए गोटे अटैक करिवो तो सी गोटे अजीब जिंस देखो से कौन करिवो ता इंटेस्टाइन को बाहर फोपाड़ दबो बुझिगला तो इंटेस्टाइन को बाहर को फोपाड़ी देवा गुण कौन कुआ जाए इविसरेशन तमे कह से इंटेस्टाइन टा कहीं फोपाड़ देला अरे सुनो इंटेस्टाइन टा खाई की शांति हैला बेलू ये फुर रही जाइथिबो हैला कि नहीं दे आर वेरी स्लो एनिमल्स तो दे कैन नॉट रन अवे तो से पे से माने कौन करंती किसी ना किसी होस्ट को खाया पे दे दियंती प्रीडेटर को से खाउथिबो ये तारे फसी पड़े थी अंडरस्टूड तो evisceration is a technique which helps sea cucumber to prevent death हैला देखो चालाक प्रेडेटर कौन करिवो से पूराटा खाइदबो किंतु जो कैजुअल प्रेडेटर से कौन करिवो हां टिके टिके बसी बसी खाइबा तो खाइ से इंटेस्टाइन खाइला बेलू पूरे जाइथिबो तम कहो सर इंटेस्टाइन फोपाड़ से बंचिबो केमिति अरे से बारा रीजनरेशन करि पारुची तो जदि से रीजनरेशन करि पारुची ताहाले से रीजनरेट करि देबो अंडरस्टूड तो जो इंटेस्टाइन टा से फोपाड़ी थिला ताकू से आउ थरे तैयारी करि नबो भितरे बिकॉज़ दे हैव एक्सट्रीमली हाई सेंस ऑफ रीजनरेशन क्लियर एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एटा जानिया दरकार about 85% echinoderms are poisonous they are even deadly to man इवन तमे देखिथिबो बहुत जो सी बीच रे बुलंती तो ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ व्हाट सो व्हाट इज द स्पेशलिटी कहला तो जेबे भी तमे सी बीच रे चलीबो सब बळे केयरफुल हबो जदि अर्चिन्स थांती हैला
तो तमे भूल जदि समुद्र रे गोड़ पानी देदेल आ गोटे अर्चिन थिला नांची तो फोड़देला तो यू मे इवन डाई बुझीगल तो सी अर्चिन्स आर वेरी वेरी डेंजरस है से महाविषाक्त ए देखो से कौन धरिची एवडा तो दीज आर ऑल सी कुकुम्बर्स है so these are all sea cucumbers now आमे डिस्कस करिबा यूनिक फीचर माने जोड़ा खाली एकांडम रे मिले कौन कौन bilateral symmetry in the larva and radial in adult तापरे ambulacral interambulacral system तापरे mesodermal skeletal structure तापरे water vascular system तापरे ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन तापरे पेडिसिलारिया फॉर क्लीनिंग द बॉडी सरफेस देखो जेबे से माने तळे माटी रे पडिकी रहउचंती ता माने सबु जाक समुद्र गंधिया तांको ऊपर पड़थुओ कि नहीं है ना जैसे अगर हम लोग बाहर वी आर स्लीपिंग आउटसाइड तो सकाळ तम उठिला बेलकू तम चदर ऊपर गदाय धूली थिबो तो लाइक दैट सेही पे तांकर जो सरफेस ऊपर अलिया पड़े से अलिया टाकू क्लीन करिया पे से माने कोन करंती पेडिसिलारिया यूज कर ठीक अछि एंटेरोसिलोम एंड ड्यूटेरस बॉडी प्लान so these are special features of what echinoderms तापरे डिजेनरेट फीचर माने जोड़ा तार लॉस है जाई हेड नहीं नो हेड okay they'll have no head no circulatory system simple sense organs okay and तमरा इंजरी जो हबो ओके तो तमरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी आम माने कोन कोथरे इनकम्प्लीट थिबो लाइक सी लिली रा कोन से फिक्स्ड तो सी तमरा तळे फिक्स्ड है तो तांकर डाइजेस्टिव सिस्टम कोन हबो तांकर माउथ आ एनस दीटा जाक ऊपर पड़क पड़े एटा एक्सेप्शन है गेला तापर किछि हमर एकांडा मरी जाए तो जो माने नेचुरली डेथ अछि जो माने नेचुरल मृत्यु अछि तो तांकर कोन हबो तांकर जो जिंस गुडा ओके तो नेचुरल डेथ अछि ना तांकर so that is why they will preserve things now no excretory organ हमें डिस्कस करछे now chordate like features कौन है गला radial cleavage mesodermal skeleton deuterostomous body plan enterocoelom एड़ा सबू तमर कौन these are all chordate like features देखो एटा होची तापर क्लास क्लासिफिकेशन पळे आस्ते तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन देखा तो पांचटी क्लास अच्छी तो स्टारफिश टू स्टार को जाए तेरे जूलॉजी तांको कौन को आजीबो एस्टेरॉइडिया ठीक अछि तो दैट इज कॉल्ड एस्टेरॉइडिया नाउ सेकंड कैटेगरी उडा साप भलिया हाथ दे आर कॉल्ड ब्रिटल स्टार या बास्केट स्टार या सर्पेंट स्टार केक भले आछंती कॉइन भले आछंती दे आर कॉल्ड सी अर्चिन या क्राइनोइडिया फोर फोर्थ अछि तमरा के होलोथुराइडिया या सी कुकुम्बर एंड लास्ट होची सी लिली दे आर कॉल्ड क्राइन ठीक अछि ताहाले शेप कौन समस्तंकर पेंटामेरस नाउ आर्म्स पंच देखो एम्बिलैक्रल सिस्टम समस्तंकर प्रेजेंट अछि देखो कोथरे स्टारफिश रे अछि तापरे सी कुकुम्बर रे अछि आ सी लिली रे अछि तो स्नेक लाइक जो ऑफिरोडिया तार तो आर्म ना पतला पतला ना तो से एम्बिलैक्रल सिस्टम कोड रखिबो एंड ए माने कॉइन डिश सेट आंकर ना तो ब्रिटल स्टार एंड आमर जो कौन
जो एक्टिनॉइड तांकर ओके दे डोंट हैव एनी कौन दे डोंट हैव एनी एम्बिलिकल सिस्टम या जाको आमे कहू वाटर वास्कुलर सिस्टम तापर माउथ समस्त तल आड़क थी खाली मु कौन कही सी लिली रा ऊपर आड़क थी ठीक अच्छे तो माउथ इज कौन माउथ इज टुवर्ड्स ग्राउंड टुवर्ड्स ग्राउंड टुवर्ड्स ग्राउंड टुवर्ड्स ग्राउंड टुवर्ड्स स्काई एनास समस्त उल्टा पटे एबोरल माने ऊपर पटकू एब माने आवे ओरल माने माउथ तो माउथ रो अपोजिट टा होची व्हाट माउथ रो अपोजिट टा होची तमरा एनएस हला सिमेट्री देखिबो समस्त रेडियल खाली तमर सी कुकुम्बर टा बायलैटरल काहे की अरे काकुडीडा को आमे दुटा इक्वल अपोजिट गोटे प्लेन में कर परिबा हला तो सी कुकुम्बर्स आर योर बायलैटरल पेडिसिलारिया खाली अच्छी आमर स्टारफिश रे आउ अर्चिन्स रे आउ कोथरे पेडिसिलारिया न थाए नाउ लार्वा एटा बहुत इंपोर्टेंट लार्वा टा तमे देखिबो कोथरे तो लार्वा होची स्टारफिश रा लार्वा को कौन कहती दैट इज कॉल्ड प्राइपिनारिया नहले डाइप्लुरुला नहले ब्रैकियोलैरिया तो दे आर स्टारफिश लार्वा तापरे स्नेक लार्वा स्नेक माने होची ऑफियो माने कौन साप तो तो स्नेक लार्वा को आमे कहूछु ऑफियो क्लूटियस हला तापरे अर्चिन लार्वा को कहा जाउची एकाइनो प्लूटियस तापरे हमर जो सी कुकुम्बर लार्वा कहा जाउची ऑरिक्युलरिया हला एंड सी लिली रो लार्वा कहा जाउची डॉलियोलेरी ठीक अछि रेस्पिरेशन मु कहितली कैरेक्टरिस्टिक अछि तो रेस्पिरेशन स्टारफिश रो कोन डर्मल ब्रैंकिए सी सरफेस कोन ब्रिटल स्टार रो कोन जेनाइटल बर्सा तापरे अर्चिन रो कोन पेरिस्टोमियल गिल्स माने तार माउथ चारिआडे गिल्स थिबो तापरे सी कुकुम्बर होची क्लोआकल रेस्पिरेटरी ट्री आउ सी लिली होची कौन सी लिली होची ट्यूब हला दीज आर स्पेशल थिंग्स तापर एग्जांपल हमें जानिचे एस्टेरियास तमर स्टारफिश एंड सो ऑन आई विल शो यू सो मेनी ब्यूटीफुल डायग्राम्स एटा होची हमर समरी तो जो माने भी चाहूच आर गोटे स्क्रीनशॉट नहीं पारिबो हला यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ना एटा होची तुमको लार्वा तार लाइफ साइकिल ता देखो छी मु स्टारफिश हला तो दिस इज द स्टारफिश लाइफ साइकिल एई देखो एटा देखो लेफ्ट रे देखो ट्यूब फीड सिस्टम गुडा केते डिटेल रे तुमको ट्यूब फीड सिस्टम देखाई हला now these are all starfishes तो जो मोटा मोटा देखो दैट इज आल्सो कॉल्ड सी पेंटागन ठीक अछि एई जो मैनी आर्म वाला ताको सन स्टार कुआ जाए देखछो कि नहीं एटा सूर्य वाला दिस so this is the some example अछि तो ग्रोमिया मनीलिस लुइडिया मैक्युलाटा एस्ट्रोपेक्टेन पेडिसिलारिया देखो छी हैला आ एटा अछि कॉमेट स्टेज माने कोन मु तुम कोन कहितली जेबे हमें स्टारफिश को पांचटा खंड करके फोपाड़ दवा तो से धीरे धीरे रीजेनरेट करया पे चाहिबो तो तुम ए चित्र में कोन देखुछ तार बड़ आर्म टा कोटा जोडा हमें छिंडे की फोपाड़ थिले तो बाकी पांचटा पड़े थिला ना तो तुम देखो से तळे छोट छोट आर्म डेवलप करिछि सेटा आउथरे बड़ हे जिवो सो ए स्टेज रे जोथरे गोटे बड़ आर्म थिबो एंड मेंचे छोट आर्म्स थिबे ताकू कॉमेट स्टेज कुआ जाए
ହେଲା so many beautiful ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଆନିମାଲିଆରେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ସି ଆନିମାଲ କିଙ୍ଗଡମ ପଢିଆ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତମେ ଭାବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖିଛ ଇମାଜିନ ଏଇଟା ହଉଛି ଫସିଲ ଦିସ୍ ଇଜ ଫସିଲ ଅଫ ଷ୍ଟାର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଅରିଜିନାଲ ଫସିଲ ଇଏ କୋଇ ମଜାକ ନାହିଁ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରିଟଲ ଷ୍ଟାର ର ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ ଫଟୋ ଦେଖେଇଛି ଆଉ ରାଇଟ ରେ ଫସିଲ ଦେଖେଇଛି ହେଲା ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ବ୍ରିଟଲ ଷ୍ଟାର ର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ତ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ସାପ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି ଦିସ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ ଏ ସରପେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର ଟଫିଓସେଫାଲସ୍ ସୁପରବା ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫାଇଟନ ମ୍ୟୁରିକାଟମ ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି ସେପାଇଁ ତାକୁ ବାସ୍କେଟ ଷ୍ଟାର ବି କୁହାଯାଏ ଅଫିଓଥ୍ରିକ୍ସ ଅଫିଓ ମାନେ ସ୍ନେକ୍ ତ ସେପାଇଁ ଅଫିଓଥ୍ରିକ୍ସ ହଉଛି କଣ ବ୍ରିଟଲ ଷ୍ଟାର କ୍ଲିୟର देखो एटी केते सुंदर बास्केट स्टार गॉर्गोनेसेफालस सच ए ब्यूटीफुल एनिमल माने यू कैन नॉट इवन इमेजिन लोक एटा भाबी पारिबेनी एटा गोटे गछ भलिया माने लोक कोन आगो आगो प्लांट्स भाबुतले ना so they were fixed animals so a lot of earlier scientists they thought they are plants ହେଲା କେତେ ବ୍ରିଟଲ ଷ୍ଟାର ଅଛି एडा होची ब्रिटल स्टार रो फॉसिल तो देखो एडा सुंदर फॉसिल दिखाई ऑफियोपेट्रा लिथोग्राफिका तो फ्रॉम द लोअर हाइंड हैंड बेड्स एडा जुरासिक पीरियड थिला जर्मनी रु मिलिछ राइट साइड रे एस्टेरिया साइट्स अ ट्रेस फॉसिल ऑफ एन ऑफ्यूरॉइड हैला एडा भी जुरासिक पीरियड रु मिलिछ एटा होची तमरो सी आर्चिन देखुछ देखो केते सुंदर गोल वाला बॉल वाला दुस ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ଗୁଡା ବିଷାକ୍ତ ରେ ବାବା ଯଦି ଭୁଲରେ ଗେଞ୍ଜି ହେଇଗଲା so my person will die ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଦେଖିବ ନିଟ୍ ରେ ଆମେ ଯୋଉ ଯଦି ଏକାଡେମୀ ରୁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି 7 ଥର ଆସିଛି ଆରିସ୍ଟାଟଲ ଲଣ୍ଟନ କଣ तो एक्चुअली आमर जो सी अर्चिन र दांत गुड़ाकू चुईंग apparatus कुआ जाए एरिस्टोटल्स लैंटर्न हे गला तो ये देखो केते सुंदर फोटोग्राफ देखै तुमको मु तो चुईंग apparatus ऑफ सी अर्चिन or dentition of sea urchin is also known as what? Is also known as Aristotle's lantern. ଯଦି ତମେ 10-15 ବର୍ଷ ତଳର PYQ କରିବ ଏଗୁଡା ଆସିଛି ଏବେ କଣ ନା ଏବେ ତ ପୁରା ଏନସେଟ୍ ତ କିଛି ଆଉ ଦେଇନି ନା ତ ଏବେ ବିଫୋର 2025 ସବୁ ଇଜି ଇଜି ପେପର ଆସୁଥିଲା ଏଇ 25 ର ପେପର ଟା ଟଫ୍ କରିଦେଲା ନା ତ ଏବେ ଆଉ ସେଇ ଇଜି ପେପର ଆସିବ ନାହିଁ ଏବେଠୁ ପେପର କଷ୍ଟ ଆସି ହେଲା ସି ଦିସ୍ ଇଜ ରିସି de mare luminosi actually ଏଇ ସବୁ ତାର ଯୋଉ ସ୍କେଲିଟନ ଆମର ସି ଆର୍ଚିନ ର ସ୍କେଲିଟନ କୁ କାଢି ଏଥିରେ ଲାଇଟ ଲଗେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଫସିଲ ର ସି ଆର୍ଚିନ देखुच तो दिस इज फॉसिल क्लाइपियस प्लॉटी इरेगुलारिया एटा होची तमरा मिडिल जुरासिक पीरियड रो फॉसिल 160 मिलियन इयर्स अगो हैला एटा होची तमरा बास्केट स्टार कौन जो सैंड डॉलर उड़ा कॉइन उड़ा हैला ओके तो एटा होची सी अर्चिन द इंटरनल स्ट्रक्चर ए देखो एटा कॉइन वाला पड़ची तो these are called what सी बिस्किट्स या सैंड डॉलर्स ହେଲା ଏସବୁ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ପଡିକି ଥିବ ତମେ ଯାଇଥିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଲାଗିବ କଏନ ଗୁଡା ପଡିଛି ହେଲା ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଡଲର ହେଲା
how it looks like this. ଏଇଟା ହଉଛି ସି କୁକୁମ୍ବର, ସମୁଦ୍ର କାକୁଡି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଓକେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସି ଲିଲି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଠି ଦେଖ, and even I have shown you a fossil form also. ହେଲା। So that is all for today. I think you have enjoyed. So anybody who has to ask some doubts, you can also ask. କିଛି doubts ଅଛି ଯଦି ପଚାରି ପାରିବ। Okay, so if you have no doubts, so I am ending the lecture now. So now you can take a 10 to 15 minutes break, and then the next class will start, and it will be taken by Tapan sir about protochordates. Hela? चाय वाय करूया सकाळ सकाळ आधी वाटर हो ना चाय मिळाली होती घरे ସେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ପୂଜା ପାଠରେ ମୁଁ ମାଗିଲିନି କାହାକୁ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ନା ରହୁଥିଲେ गुड मॉर्निंग अरे ए कुआडे गलो रे आस शीघ्र कम बस ଶୀତ ଦିନ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିବ आई अंडरस्टैंड बट द थिंग इज कि काम भी जरूरी है तो कम क्विकली क्विकली जल्दी 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 कम क्विक we had wrapped up the arthropods and I think JJ sir must have taken the rest of the phylum today. ठीक है तो we'll start with the hemichordates and chordates. ठीक है okay Echinodermata I think is already done. Yes. Okay. Okay. बच्चा पार्टी
Let's begin then. Are you there? Sabu, is the audio video clear? Is the audio video clear? Come on, respond. Audio video clear achi? Is my voice audible? Can you see everything? Yes. Come on, confirm. अरे क्या हुआ रे? Is everyone there? Yes. Is the audio video clear? Confirm so that we can start. Fine, great. Okay, thank you for the confirmation. Let's begin then. Okay, now as you can see, when you look at the animal kingdom, basically you classify them into non-chordates and chordates. Fine. Now, this particular hemichordates, they are also put under the non-chordates. Okay? But these are slightly more evolved. And we can say that they are the ancestors or the precursors of the modern day vertebrates and chordates. Fine. Mujhela. Okay. So as the name suggests, you can see hemi implies half. Hemi implies half. Okay. Fine. So those organisms that were no partially chordates or showed similarities to that of chordates. Fine. Are referred to as hemichordates. Clear hai? Are bujhiyala? Okay. Now let us go into the details. As I told you previously also, whenever we are studying, ठीक है, यहाँ पे JJ sir, we both always are interested in clarity. ठीक है, so we put in a lot of efforts in showing you things in audio visual mode, explaining things so that you understand things. ठीक है, now these pictures as you can see, ठीक है, दिख रहा है आपको? This appears like a worm. It appears like a worm or a vermin, but actually worm or no, it's not a worm or vermin. It's a hemichordate. ठीक है? It was earlier considered as a subphylum of Chordata. Subphylum of Chordata. ठीक है? But now it has been put under the non-chordate category. ठीक है? कौन ପାଇଁ ଥିଲା? Because ଯେତେବେଳେ ଆମେ chordates ମାନଙ୍କର features ଦେଖିବା ବା properties ଦେଖିବା, you'll find the availability of the notochord, the pharyngeal gill slits, okay? Fine. The dorsal nerve cord. All these things are referred to as the properties or characteristics of chordates. So, jehetu these organisms also showed pharyngeal gill slits and certain other similarities. So, emanku subphylum of chordates include kora jau thila previously, but not now. Okay? As you can see, this basically appears like a worm-like creature. Okay? Okay? Fine. And all the members here also would appear similar, not different. Dekho. When you look at the hemichordates, as you can see, ये आपको किस प्रकार दिख रहा है? Same worm like दिख रहा है. Okay. As I said, when we'll go into the categorization, आपको already चीजें पता है. You already know things. So let us go into the details of it. ठीक है?
जैसे you already know that these are triploblastic. They are triploblastic. ठीक है. Then if they are triploblastic, then phylum is present. All these things we'll see. Now, if you look at the level of organization, they have an organ system grade of organization. And display a tube within a tube body plan. Fine? Is that clear? Okay. I told you previously also that after a certain category, that means the platyhelminths, when you look at all of them would have same type of or similar types of organization. Okay, and properties pakapaki saman rahego. Properties would be considerably similar. Considerably similar. ठीक है. तो यहाँ पे देखो bilateral symmetry है. Why? Because you have a mouth-like structure. And I told you the most important phenomenon because of which they show a bilateral symmetry is the cephalization. Manpurji, cephalization क्या होता है बच्चा? What do you mean by cephalization? Cephalization क्या होती है? चलो जल्दी बताओ. Make it quick. The formation or development of head. Formation of head is known as cephalization. तो जेहेतु मुंडटी ठीक से formation है ला, तो क्या हो गया? Say इसवरे eyes, the ears and other structures also become organized. Now if they become organized, so you'll have them in pairs. अगर pairs में होंगे, then on one side you'll have one, and in the other side you'll have the other one. So obviously symmetrically ये bilaterally बनेंगे. ठीक है, and the position is fixed. ठीक है, so bilateral symmetry होगी. And जितनी को higher organisms actually all of them would have a bilateral symmetry. Remember this. Then you see triploblastic है, 3 germ layers होंगे इनमें, ectoderm, mesoderm, endoderm. You already know that. Fine. अब यहाँ पे आ जाओ. 80 यूनिक जिनसा हमें पाइबा. ध्यान दो इधर. They are coelomate organisms. ठीक है, मतलब they possess a true form of coelom. A true form of coelom. ठीक है. Fine. So they are basically coelomate or eucoelomate. Eucoelomate organisms. ठीक है. कौन पाई? You can see clearly. बाहर ectoderm रोइला, भीतर endoderm रोइला. ठीक है. And the mesoderm has split into 2 sections. Outer section, inner section. Outer section, inner section. And ये दो sections के बीच में there's a cavity being formed. This cavity is referred to as the coelom. ठीक है, बुझिएला. And mogere, you'll have the lumen. This is the lumen. And ये lumen क्या बनता है आपका? The alimentary canal. ठीक है, we'll see that. देखो ध्यान से. ये जो आपको दिख रहा है, all these things which you see, the white spaces you see all around, ये सब के सब coeloms हैं. अलग अलग जगह पे अलग अलग coeloms हैं. ठीक है, you can see this collar coelom, you can see the proboscis coelom. ठीक है, fine. So these are all various coelomic regions present in the organism. मतलब cavities
present in different regions of the organism. Okay. Now you see habits and habitats. ये exclusively marine है. They are exclusively marine. Means only observed in saline water, seas and oceans. Only observed in the marine habitat, that is seas and oceans. Seas, oceans, estuaries, इनमें ही आपको ये दिखेंगी, बाकी और कहीं नहीं दिखेंगी. ठीक है. Only in the salt water regions you can observe them. So that's why we call them exclusively marine. Not that. Now, look at the various systems. Now, digestive system or the alimentary canal. Digestive systems or the alimentary canal. Okay? It is complete. So we say the alimentary canal is complete. Okay? That is anterior opening, mouth, posterior opening, anus. Okay? Since you have a mouth present, you have an anus present, therefore it represents a complete form of alimentary canal. ठीक है. Fine. Then, when you look at the respiratory system, the respiratory apparatus involved is basically a set of gills or the pharyngeal gill slits. ठीक है. तो यहाँ पे आपको the gills are the ones which help in respiration. Now, these are basically gill slits. क्यों? Because the gills are exposed. Gills are exposed. बाहर है. ठीक है. Like in case of the modern super class Pisces, macho, you'll find they have an operculum. That is, the gills are not exposed to the outside, but rather they are covered. Okay. So here you do not find any covering. You have simply gills present, okay, which are exposed to the outside. Okay. That's why we call them gill slits. Fine. So these are basically pharyngeal gill slits. Therefore, we say the mechanism of respiration is branchial. Is branchial respiration. Branchial माने कौन है? Respiration through gills is known as branchial respiration. मन रखियो term टी. Okay? Remember this. Branchial respiration implies respiration through gills is known as branchial respiration. Is that clear? Fine. यहाँ पे you can see these gill slits properly displayed. ये आपकी gill slits है. ठीक? Okay. Then, if you look at the circulatory system, respiratory हो गया,
circulatory. Now, basically, the mechanism of circulation of blood and other body fluids, no, in the organism is referred to as circulation, and the system which helps in this particular mechanism is referred to as circulatory system. Okay, fine. What kind of circulatory system do we have here? It's an open type of circulatory system. Open क्यों है? Yes, open क्यों है? Now basically the blood or body fluid, blood or body fluid moves through sinuses, ठीक है, and not arteries or veins or capillaries. To properly develop arteries, veins or capillaries nahanti. Instead, they have sinuses through which the body fluids or blood propagates. ठीक है? Okay. Now, all the internal organs are immersed in the body fluids. ठीक है? Is that clear, people? Since you have all the organs or organ systems immersed inside the body fluids, therefore we call this an open form of circulation. Now, क्या components इसमें already है? See, you have a heart. Yes. What kind of heart? It is basically a neurogenic heart. Remember this. ठीक है? Now, you have plenty of sinuses. ये देखो, mesocele is a sinus. ठीक है? Protocele is a sinus. Fine. Okay. Metacele is another sinus. तो ये आपकी sinuses है. All the organs are present in, submerged in it. Okay. When, blood vessels etc. are primitively formed. तो दिखते तो हैं, but पूरी तरह से developed नहीं है. They are not developed. So what do we have here? We have the pumping organ of the heart. We have certain blood vessels in the form of ventral blood vessel and the dorsal blood vessel. दो parallel blood vessels है. Then, but you cannot classify them as arteries or veins or capillaries. वो आप नहीं कर सकते. You can only call them to be blood vessels. Why? Because they carry the blood or body fluid. ठीक है? Then, अच्छा, क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर इनकी जो ब्लड है क्या वो रेड है हमारी तरह? नो, इट्स नॉट. ठीक है? वो आपकी बेसिकली लिम्फ के जैसी है. इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ लिम्फ. In certain forms of these hemichordates, they have vanabin, a pigment. Vanabin, याद रखिएगा. Vanabin. ये क्या है? ये vanadium pentoxide से बना होता है. Vanadium. You must have heard of vanadium chemistry. ठीक है? तो जेहेतु vanadium अच्छी, तो इसका नाम vanabin दिया गया. And it is some green in coloration. Green. ठीक है? तो इनकी ब्लड जो है वो ग्रीनिश कलर की दिखती है. Which part चुनाने? That's why you see here green coloration दिया हुआ है. You can observe greenish coloration is given. क्यों? Because of the vanadium. Whatever. तो हमारी जैसे रेड पिगमेंट है, that is hemoglobin. इनकी वैसे ही green pigment is there और green coloration is there. That is your vanabin. मानो रही वो? ठीक है. तो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, साइनसेस हो गई. ठीक है? Comprising all these three, fine. You can form the circulatory system in case of hemichordates.
Is that clear, बच्चा? ठीक. Now, once we have done the circulation, उसके बाद आपकी the next thing that comes is your reproduction. Here we are looking at the most important ones first. उसके बाद और कुछ extra features है उसमें जाएंगे. Now, when it comes to reproduction, first of all, these are dioecious in nature. अब dioecious का क्या अर्थ होता है रे बच्चा? What do you mean by dioecious? Yes, dioecious का क्या मतलब होता है? The male and female reproductive structures are present on different organisms. मतलब male, female, ठीक है, separate or you can call them unisexual. ठीक है, unisexual. Is that clear? Okay. Then, since they are basically aquatic organisms, पानी में ही रहते हैं, marine waters. So therefore, they prefer external fertilization. क्यों? Because they would lay their eggs in water and they would fertilize in the water. मतलब male will release its sperms from the gonads. The female will release the egg from the gonads and the fertilization will be carried out in the water. Hence, there is no question of any kind of copulatory devices or copulatory methods. ठीक है? तो इसमें fertilization is basically external. Now, since these are primitive forms of organisms which are less developed than the chordates, तो इनमें आपको larval form by indirect development दिखता है. As you can see here, fertilization is external and the development is also indirect. मतलब you can observe the larval forms here. As you can see here, the larvae in case of balanoglossus, ये balanoglossus है, उसकी larvae को हम tornaria larva बोलते हैं. Remember this. Larva of the balanoglossus known as tornaria. Tornaria, 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 important है, याद रखिएगा. ठीक है, the tornaria larva in case of balanoglossus. Clear? Fine. Okay. ठीक है. Now, as you can see, this is the structure of the balanoglossus. ठीक है, ये इसकी क्रॉस सेक्शन है. तो हमने क्या किया, इसकी क्रॉस सेक्शन में as you can observe, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, this is these are the gonads present. Fine. ठीक है, in case of male. ठीक है. Now, when you see the gonads here, these gonads would result in formation of the gametes. ठीक है, that is either the sperms or the eggs and would be laid to the outside. ये आपकी mouth section है. ठीक है, so will be laid to the outside. Once it is laid to the outside, fertilization will occur inside water. ठीक है ना? अरे बुझिए रे बच्चा. And once they have fertilized, so they will start the development. उस development में आपकी कौन सी process होती है? Metamorphosis की process होती है, where the larval form starts to develop. ठीक है? Okay, fine. Now, so reproduction हो गया. अब यूनिक फीचर्स में आते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है. Now, as you can see here, we are talking of a sample or a specimen जिसको हम बोलते हैं balanoglossus. क्या बोलते हैं रे बच्चा? Balanoglossus.
glosses. Sometimes balano glosses को और क्या नाम दिया जाता है? Tongue worm. Tongue worm भी बोला जाता है because it appears like the tongue. ठीक है, देखो ये सामने की तरफ कोनिकल हो गया है, ठीक है, तो टंग आपकी कोनिकल ही होती है, so therefore it is sometimes referred to as the tongue worm. ठीक, now तो इस बालानोग्लॉसिस की फीचर्स क्या है? वर्म लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी, एंटीरियर को हम लोग बोलते हैं प्रोबोसिस. ये जो सामने देख रहे हो भाई, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस बोलते हैं. इट इज रेफर्ड टू एज प्रोबोसिस. ठीक है, अब दिस प्रोबोसिस, ठीक है, is representing the head region as well as the mouth region of the melanoglossus. ठीक है, अब इस प्रोबोसिस के नीचे below the proboscis, this section, ये जो section आपको दिख रहा है, this is referred to as, ये जो section आपको दिख रहा है, this is referred to as the collar. ठीक है, तो पहला प्रोबोसिस हो गया, दूसरा हो गया कॉलर. फाइन, फिर आएगा आपका ट्रंक सेक्शन, लंबा सा. याद रखिएगा, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट. माने જેમથી તમે reptiles ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛ, in case of monkeys etc, dogs, cats etc ଦେଖୁଛ, ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜଟି anus ପରେ ମଧ୍ୟ extend କରିଥାଏ. But here you do not have a post anal tail, so post anal tail is absent. ठीक है, okay, then collar bears stomachord. Collar bears stomachord. ठीक है, collar bears stomachord. Fine. अब ये this stomachord basically what exactly is you know, this is the reason why you call them hemichordates. क्यों? इनमें notochord properly develop नहीं हुआ है. You do not find a properly developed or complete notochord. Rather, instead, you have a primitive form of a notochord. A primitive form of a notochord. And that is known as the stomochord. ठीक है? Fine. A rudimentary structure similar to notochord is known as stomochord. क्यों? ये माउथ सेक्शन से डेवलप होता है. जेहेतु माउथ सेक्शन पाखरु डेवलप ହେଇଛି, ठीक है, स्टोमा और स्टोमियम represents the mouth और refers to the mouth, ସେଥିପାଇଁ इसको स्टोमोकॉर्ड भी बोला जाता है. ठीक है, देन इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चा इसको. The excretory structure in case of the melanoglossus is proboscis gland. Proboscis gland माने ये जो proboscis देखुछ, से proboscis भितरे ही there's a gland that acts as the excretory structure. Oh, anchor excretory material टी कौन? What is the excretory material in case of melanoglossus? Mostly it is ammonia. It is ammonia. Therefore, they are ammonotelic. Ammonotelic. मन रखिबो. ठीक है, फाइन, ओके. As you can see here, melanoglossus, as I already said, इसे आप tongue worm बोलते हैं. Then saccoglossus, ठीक है, this is another specimen of the phylum Hemichordata. इसमें ज्यादा species तो है नहीं, but and all these species which you'll see here are basically similar to the similar in structure. That is, they are worm like in structure. ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं. ठीक है, now look at this thing. ये आपकी समराइजेशन है of the entire Hemichordata. This is the summarization of the entire Hemichordata. मैं quickly I'm quickly running through it. आप इसे 2-3 मिनट just observe करो. If you want to make a note of it, ये just आप एक अगर ऐसी शीट बना के रखोगे तो रिवीजन କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ.
उसमें आप फटाफट देख सकते हो, जनरल फीचर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री इज बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूसेलोमेट्स है, हैबिट्स इज मराइन, digestive system is complete, respiration is through pharyngeal gills, then circulatory is of the open type, okay, reproduction they are dioecious, fertilization is external, development is indirect, larva is known as tornaria, larva is known as tornaria, tornaria, ठीक है। Then unique features में they are worm-like in shape and form, proboscis, collar and trunk. These are the three divisions of the entire body. ठीक है। The collar bears the stomachord. The collar bears the stomachord. Stomachord ticono. Primitive notochord. इसीलिए इसे हेमिकॉर्डेड बोलते हैं। Excretion occurs to the proboscis gland. Examples में melanoglossus and saccoglossus are the two examples. ठीक है, just 2 minutes इस चीज को एक बार देख लो, जहन में डाल लो, just and उसके बाद we'll move into the next one. ठीक है, जल्दी जल्दी, make it quick. Okay, fine. तो ये हो गई आपकी बेसिकली the hemichordates general features done. Fine. Just a sec. Hello. Hello. आगे मैम। ओके, फाइन फाइन। उसके बाद आफ्टर द फाइलम हेमिकॉर्डाटा, नेक्स्ट वी मूव इनटू द फाइलम कॉर्डाटा। देखो ना, बेसिकली व्हेन वी से कॉर्डाटा, कॉर्डाटा का मतलब होता है रे बच्चा, the organisms have a properly developed notochord. They have properly developed notochord.
ठीक है, तो आप देखो ये डायग्राम, you can understand here. ठीक है, if you look at the structure of this particular chordate, what you'll observe, सब्बा ऊपर देखो, सब्बा ऊपर you'll find the nerve cord. This is known as the dorsal nerve cord. ठीक है, then comes the notochord. ये आपकी notochord है. ठीक है, then comes the gills. तो इनको बोला था gill slits. ठीक अच्छी, तापर आसिला post anal tail. Post anal tail. Now, hemichordates did not have a a post anal tail, whereas here you have a properly developed post anal tail. ठीक है, now same insert ही एपटे देखो properly. ठीक, ये जो insert देखो जो, this is your dorsal hollow nerve cord. This thinner one is the notochord. This is your alimentary canal, mouth and the anus. ठीक है, fine. This is the heart. These are the gills which represent the respiratory mechanism. Fine. So, and here you can observe the post anal tail. Here we can observe the post anal tail. So these are the structures which now, in case of the chordates, are clearly visible, which were not so prominent in case of the hemichordates. Hemichordates se notochord no thila, stomochord thila. ठीक अछि. In case of the hemichordates, you did not have a post anal tail. Even, in fact, tankara nerve cord, we also, you did not find the dorsal hollow nerve cord. The gill slits which you will see here, these are well developed. In their case, it was less developed. Many other things. Fine, we'll come to them one by one. देखो. In case of phylum Chordata, it includes animals. तांकर कौन features रहिला रे बाबू देखो. प्रथमे गोटे notochord रहिला. Notochord थिबारु ही आमे तांकु chordates कहूचे. ठीक है. Then dorsal tubular hollow nerve cord. ठीक है. In case of the non-chordates, आपका ventral nerve cord होता है. यहाँ पे the nerve cord is dorsal. In case of the non-chordates, ventral हो जाता है. ठीक है. And heart dorsal हो जाता है. But here you'll have the heart to be ventral and the nerve cord to be dorsal. You'll see them. Then pharyngeal gill slits. So notochord ହେଇଗଲା. ठीक ଅଛି. Then dorsal hollow nerve cord ହେଇଗଲା. ठीक ଅଛି. तापरे pharyngeal gill slits ହେଇଗଲା. Now these three things are the predominant conditions to consider an organism as a chordate. बुझिपालो, एई तीनोटी features थिले आमे ताकू आराम से और clearly chordate बोली कहि पारिबा. Okay, then notochord is flexible rod like, located in the mid dorsal line. कहां पे located है ना, dorsal located है. ठीक है, between the alimentary canal and the hollow nerve cord. Between the alimentary canal and the hollow nerve cord. कहां पे, in the embryonic stage. ठीक है. हो, now ये आपकी basically हो गई the primary properties of the इसकी chordate की. ठीक है. Now, if we make or establish a comparative analysis between a chordate and a non-chordate, तो क्या क्या चीजें बनती है देखो. ठीक है. Now, पहला आया chordata, दूसरा आया non-chordata. Now, compare them. Notochord is present in case of chordates. It is absent in case of non-chordates. Then central nervous system
सेंट्रल नर्वस सिस्टम बस CNS। इनमें क्या है, कैसा होता है? इट इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व कॉर्ड। यस, यहां पे क्या हो रहा है देखो, वेंट्रल है, इटी डॉर्सल, इटी वेंट्रल, ठीक। ये हॉलो है, दिस इज हॉलो, इट इज सॉलिड। ये सिंगल है, ये क्या है रे बच्चा, डबल है। गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। गुड मॉर्निंग। यस, फाइन। Ventral, solid, double in case of non-chordates, and in case of chordates, in case of chordates, extremely sorry for this, I cannot directly give you this PDF, but yes, you can get the PDF from the archives where these PDFs are loaded. Okay, बुझेला? So from them हमारा पोर्टल होची ना, DHSC पोर्टल है, ठीक है, शिक्षा, we call it शिक्षा पोर्टल. From there you can get access to it. आपकी आईडी, लॉगिन आईडी जिसको हम कहते हैं, रजिस्टर्ड है, उसके यूज करके you can access them. You can access the video lectures also. You can also access the PDFs, study materials, as well as questions also. ठीक है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि भैया क्लास अटेंड नहीं करेंगे, क्लास अटेंड नहीं करेंगे बाद में वीडियो देख लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। व्हाई? बिकॉज इन दोज वीडियोस यू विल नॉट बी गेटिंग द डाउट क्लियरिंग, वो आपको यही मिलेगा। एंड डाउट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल इन एनी काइंड ऑफ स्टडी। क्लासरूम रा मजा ही अलग है। Why? Because classroom में there is interaction between the students, that is receivers, ठीक है, and the teachers, ठीक है. So it is a two-way function. Fine. But in case of recordings, it is only a one-way function. ठीक है, वहां से आपको सुनाई and दिखाई देगा, and you will simply listen and view things. But you cannot ask them anything because those are recordings. तो इसलिए क्लासरूम अटेंड कीजिए। क्लासरूम के बाद फॉर योर रेफरेंस और फॉर योर रिवीजन यू कैन गो थ्रू दोज, ठीक है ना। बट क्लास अटेंड नहीं करेंगे एंड ओनली उसको देखेंगे तो फिर पार्शियल काइंड ऑफ स्टडी हो जाएगी, इट विल नॉट बी कंप्लीट। ओके, so that's why it's better that you attend the classes, please. Fine. Okay, see here. So in chordates, pharyngeal gill slits are present. Pharyngeal gill slits are present. ठीक है. In case of the non-chordates, the pharyngeal gill slits may or may not be present. And यदि present हिले मध्य, they will not be as evolved as the chordates. ठीक है. Then इनकी हार्ट जो होती है वेंट्रल हार्ट होती है. In their case, it is dorsal heart if present. ठीक है, post anal tail is present. In case of non-chordates, the post anal tail is absent. Clear? आउथरे देखिए दबा, because approximately 3 to 4 times now in the NEET examination, questions on this difference has already been asked. So therefore, let us go through this again. मुंडे एकदम फिट कर दिया को, एकदम अब्सॉर्ब कर लो. Notochord is found in embryonic stages किसमें? In case of chordates. Non-chordates रे notochord is absent. Then central nervous system by CNS in case of the chordates is dorsal, hollow and single. Dorsal, hollow and single. ठीक है, because of the presence of the dorsal, hollow, single nerve cord. ठीक है, okay. In case of non-chordates, ventral, solid and double. Ventral है, solid है and double है. ठीक है जी, माने दीपट दीटा. Then pharyngeal gill slits are present in case of chordates.
In case of non-chordates, pharyngeal gill slits are absent or not properly developed. Then ventral heart hoti hai in case of chordates. In case of the non-chordates, they have a dorsal heart. Jodi heart achi. Normally, many of them do not have a heart also. But those who have a heart, it's dorsal in position. Theek achi. Then post-anal tail is an essential part of the chordates. In case of non-chordates, the post-anal tail is absent. Theek hai. I hope this is clear now. याद रह गया होगा, and you people would answer the questions correctly whenever asked. ठीक है बच्चा, आगे बढ़ो. Now, when we classify the chordates, ठीक है, the phylum Chordata is divided into these three subphylum. ठीक है, the subphylum Chordata, the phylum Chordata is divided or classified into three subphyla. Okay? That is Urochordates, Cephalochordates, and vertebrates. Or Urochordata, Cephalochordata, and vertebrata. Author Urochordata, Cephalochordata, and vertebrata. Okay? Now Urochordata मानकु आमे ट्यूनिकाटा मध्य कहि थाउ. Urochordata को आमे ट्यूनिकाटा मध्य कहि थाउ. We also refer to them as tunicata. ठीक है? Okay? बुझिएला? So Urochordata, Cephalochordata, and vertebrata. Now you can see the evolution also here. एटा देखो, ये आपको बेसिकली पॉलिप्स की तरह दिख रहा है. ठीक ना, ये आपको बेसिकली वॉर्म्स की तरह दिख रहा है. ठीक है ना, ये आपकी प्रॉपरली डेवलप्ड होगी. सो यू कैन सी द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इन द प्रोसेस. ऑल्दो all these three are chordates, but there is a certain degree of evolution involved in these. ठीक है, fine. Now look at this. सबसे पहले सबफाइलम यूरोकॉर्डाटा को देखते हैं. Now notochord is present only in the larval tail. इसकी जो लार्वा होती है, in them only you'll observe a notochord. So notochord is temporary and present only in the tail region. So notochord is temporary. काहेंकि केवल लार्वा रे दिसिबो, कोड दिसिबो ना टेल रे दिसिबो. So therefore notochord does not persist throughout life. Restricted to tail only and to larva only. That means it is not present in adults. So throughout lifespan not थाए. याद रखिएगा इस चीज को. ठीक है? Then body is covered by a test ba tunic. ସେଇଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ tunicata କୁହାଯାଉଛି. Body is covered by a test माने covering or tunic. Therefore we call them tunicata, and this is made up of a proteinaceous as well as lipoproteinaceous as well as polysaccharide covering. We call it tunicin. ठीक है, याद रखिएगा. It is made up of tunicin. Important है, remember this. Tunic होती है, made up of tunicin, hence they are known as tunicata. Okay. They are exclusively marine. ଯେମିତି ତମେ hemichordate ଦେଖିଲ, hemichordate ରୁ slightly more evolved एमाने, but the urochordates which we see, they are basically very primitive form of chordates. तो ସେମାନେ hemichordates are developed ହେଇଛନ୍ତି and very close to them. But
chordates complete bhabare heipari nahanti. ठीक ଅଛି. Therefore, although they are under the subphylum, no, subphylum, but of the chordata, but they do not resemble the chordates in full. Clear? ବୁଝିହେଲା? ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ exclusively marine, similar to that of hemichordates, that is balanoglossus etc. Now balanoglossus etc रे ଆମେ dioecious पाइथिले. एठी these are monoecious. They are monoecious বা hermaphrodites বা bisexual. मतलब both male and female reproductive structures are present on the same organism. गोटे organism रे male and female दुईटी जाक reproductive structures present होते. Okay, fine. Then इसके एग्जांपल्स में कौन आ जाएंगी? एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम. all these are examples of the यूरोकॉर्डेट्स. ठीक है, फाइन, ओके. नाउ उसके बाद नेक्स्ट कम टू सेफालोकॉर्डेट्स. फाइन. नाउ सेफालोकॉर्डेट्स में the notochord is present from head to the tail region and persists throughout the life. The notochord is present in the complete body, মানে মুন্ডুরু নেই কি লাঞ্জা পর্যন্ত, and is persistent throughout the life. ठीक है, but the body is fish like, ठीक है, in the form of a lancelet. इसके लिए हम लोग इसको lancelets बोलते हैं. We call them lancelets. ठीक है. Then they are also exclusively marine. So although shape and form टिके change है गला, notochord complete and persistent है गला throughout life, but habitat change हला नहीं. These are very important proofs of evolution that life has originated in the oceans itself. Which part of point? Life did not originate on land, but originated in water, that is oceans or seas. ठीक है जी? Okay. They are dioecious. ठीक है. That is male and female are separate. ठीक है. Mechanism of reproduction is sexual. ठीक है. Fertilization though is external. And development is direct. Larval forms like. Okay, Bujela. Okay. Now, branchiostoma, that is amphioxus or lancelets, are proper examples of cephalochordates. ठीक है, Bujela, amphioxus, lancelets. ठीक. Then comes vertebrata. Fine. Now, vertebrata रे, जब आप vertebrata subphylum vertebrata में जाएंगे, तो basically remember this, आमे in general vertebrata पढ़ू छे, but vertebrata जब आप बोलोगे, तो vertebrata is, not limited here. तादरे पुनी various classes are there in this particular phylum. जैसे class Pikes, super class Pisces, class Amphibia, class Reptilia. ठीक है. Then you'll have the class Aves and finally class Mammalia. तो ये सब आपकी vertebrata में आती है. Fine. उसमें craniata, all these things are also included.
ओके तो एठी प्रथमे आमे vertebrates मानू देखिबा ओके now what happens here instead of notochord these have a vertebral column गोटे vertebral column आंकर हे जाई थाए जेहेतु vertebral column हे जाए सेति पई आमे आंकु cordate exactly न कहि कि vertebrate कहि थाउ ठीक अछि but notochord is present in all organisms of the vertebrata ठीक अछि fine but in the embryonic development period जेतेबेले embryo development होउथिबो सेतेबेले in all forms of vertebrates you can find the common structure that is the notochord ठीक अछि now notochord is replaced by the cartilaginous or bony vertebral column cartilaginous केमिति in case of certain pisces like sharks etc तांकर cartilaginous अछि ठीक अछि but in case of us etc we have the bony vertebral column okay एटा कहा जागा रे आसीची replacing what answer is notochord ठीक अछि so notochord आमानो केस रे अछि कि yes it is there but in the form of rudimentary structures present in the vertebral column in the form of nucleus pulposus eta mon rakhibo nucleus pulposus एई फॉर्म रे रहिता है केमिति देखो एठी सपोज भाबी नियो हम लैटरली देखुछे एटा गोटे वर्टिब्री एटा आउ गोटे वर्टिब्री ठीक अछि ना एई जे दुई वर्टिब्री भितर कोन रहिला ना आईवीडी इंटरवर्टिब्रल डिस्क तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क रो मझिरे इंटरवर्टिब्रल डिस्क रो मझिरे एई रीजन रे there is a soft spot this is known as the nucleus pulposus and ei jinsota hi represent karuchi kahaku na notochord ku so amano case re jehetu vertebral column asi jaichi notochord ta darkar nahi so notochord is not exactly present as it was in the other chordates kintu tar remnants achi the remaining parts rudimentary parts are present inside the vertebral column ठीक अछि but complete intact form can be seen in case of the embryonic stages ए जो देखु छ एठी तमे this is the notochord which is actually present in the embryonic conditions fine okay how then ventral muscular heart as we already know jetiko chordates achandi the heart is muscular myogenic ठीक अछि and located ventral section of the body okay then they have kidneys को प्रकार kidneys तीन प्रकार रही पारिबे pro meso और meta pronephric mesonephric metanephric kidneys ठीक है तीन फॉर्म रे ही पारिबे प्रोनेफ्रिक हे पारिबे मेसोनेफ्रिक हे पारिबे मेटानेफ्रिक हे पारिबे फॉर एग्जांपल आमर हाईली डेवलप्ड दैट इज मेटानेफ्रिक बर्ड्स मानकर मेटानेफ्रिक ठीक अछि सर्टेन फॉर्म्स ऑफ रेप्टाइल्स मानकर मध्य मेटानेफ्रिक और इन केस ऑफ पाइसेस इट इज प्रोनेफ्रिक एम्फिबियंस इट इज मेसोनेफ्रिक बुझबालो डिपेंडिंग ऑन की द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द किडनीज फाइन किडनी समस्त अछि but these kidneys are whether they are completely evolved or less evolved say hisabre it can be pronephric or mesonephric or metanephric ठीक अछि okay excretion and osmoregulation करि थांती के kidneys excretion तो तमे जानिछो that is the removal of the harmful metabolic waste from the body is termed excretion mostly involves the nitrogenous waste तो सेथि भाई आमे तो excretory system कहूचे सेतरे सब जिंस इन्वॉल्वड अछि
बट जितेबाला आमे एठी किडनी एटसेट्रा कथा कहूचे ये केवल आमे एठी यूरिनरी सिस्टम कथा कहूचे ठीक अछि हो then what is osmoregulation the maintaining of an osmotic balance between the internal and external environment is known as osmoregulation out there maintenance of the osmotic balance between the internal and external environment is known as osmoregulation ठीक है paired appendages, that is fins or limbs are present. Paired appendages, fins or limbs are present. ठीक है, fine. तो age insertee आप पूर्वरु नथिला in case of the hemichordates and other chordates. But here in vertebrates आपको paired form में limbs मिलेंगे. सही हिसाब से हम जब classify करूचे, ठीक है, आप जब classify करोगे तो vertebrata classify करिवो. When you classify the vertebrata, so इस तरह दीटा जिनसो आसीवा इटी मार्क करो. ये आपको बाद में will be taught, but एटा कही दोजी so that you keep in mind. इसमें अगर दो चीजें आएंगी गोटे हला रे बाबू अपोड़ा अपोड़ा माने लिमलेस जांकर गोड़ न थाए ठीक है एंड द अदर इज द टेट्रापोडा ठीक अछि दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द लिम्स दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द लिम्स ठीक है किधर गया ठीक है क्लोजिंग सेरेमनी अब ठीक है तो लिम्स यदि नहीं लिमलेस है limbs are absent on the basis of limbs suppose the limbs are absent we call them apoda suppose the limbs are present then we call them tetrapoda eta gote prakar same thing on the basis of whether they have a mouth ठीक है a properly developed mouth or jaws ठीक है उसको आप jaws absent यदि अछि suppose jaws are absent ठीक है एटा जेमती हमें कहले सेमती सपोज हमें कहूचे जॉज को ऊपर ठीक अछि सो वर्टिब्राटा रहिला एठी रे बाबू वर्टिब्राटा हो गया सपोज जॉज आर प्रेजेंट और एब्सेंट ना यदि एब्सेंट अछि तांको हमें कहबा अग्नाथा एंड जो मानको जॉज रहिला तांको कहबा वी कॉल इट gnathostoma. So if the jaws are present, we call them gnathostomes. If the jaws are absent, we call them agnatha. Got it? Okay. This is one form of classification. What else do we have? Suppose on the basis of cranium, ठीक है? Cranium विषय यदि हमें कोई बात, then same way. अक्रैनियाटा यदि क्रेनियम नाही ताले अक्रैनियाटा यदि क्रेनियम अछि ताले क्रैनियाटा got it so these are certain forms of things which will be taught to you later आप और आसीबो ठीक है तो vertebrata craniata craniata तो एटी हमें सही बोली when we say appendages के हिसाब से in case of fish they don't have limbs do they have fins in case of fishes they have fins but fins manangora property hela they are paired appendages mane dorsal fin caudal fin pectoral fin pelvic fin ये सब paired है ठीक है now remember this these are all appendages which are paired in nature ठीक है जैसे हमारे देख लो appendages we have a pair of hands a pair of legs तो ये आपकी appendages है but those are limbs in case of fish they are not limbs but only appendages ठीक है हो तो appendages रे किए अछंती fins हेई पारंती बा limbs हेई पारंती क्लियर है यदि fins रहिले ताको अपोडा कैटेगरी रे पकेवा यदि limbs आसिला ताले टेट्रापोडा कैटेगरी रे पकेवा ठीक अछि फाइन ओके यही है वो क्लासिफिकेशन वी आर टॉकिंग ऑफ
से वर्टिब्राटा रोइला. ओके, वर्टिब्राटा में दो कैटेगरीज आ गई, एक अग्नाथा दैट इज जॉलेस, तापर आसेला ग्नाथोस्टोमाटा व्हिच हैव जॉस. વર્ટિબ્રાટા ର જો અમે ક્લાસિફિકેશન કરું છે અગ્નાથા, જॉलेस, then gnathostomata that have jaws, then gnathostomata superclass is fins, that is Pisces, ठीक है, and the other superclass is tetrapoda. gnathostomata रे दुईटी superclass, एक एक that is the अपोडा. अपोडा, अपोडा मतलब लिम्बलेस, वो कौन है, एक ही कैटेगरी है फिश, सो से ହେଇଗଲା ତମର सुपर क्लास पाइसेस. ठीक ଅଛି, ହଉ. Then in case of the other, that is tetrapoda, that is also super class, they have two pairs of limbs or four limbs. तो से कैटेगरी कौन पड़े, amphibians, reptiles, birds and mammals. Amphibia, reptilia, aves and mammalia. ठीक है, तो एटा हला तमरो vertebrates रे tetrapoda classification. If you look at the Pisces category here, in Pisces you have again two types. One is the cartilaginous, that is chondrich thighs, and the bony fishes or the ostrich thighs. Cartilaginous, chondrich thighs, bony fishes, ostrich thighs. ठीक है. In case of Agnatha by jawless, you have the cyclostomata. ठीक है, इनमें सर्कुलर माउथ वाली ऑर्गेनिजम्स होती है. दे आर फिश लाइक क्रिएचर्स बट विथ सर्कुलर माउथ. एग्जांपल्स में आपकी माइक्सीन, पेट्रोमाइजन वगैरह आ जाएंगी. ठीक है, हैगफिश. सो दीज आर बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ सबफाइलम वर्टिब्राटा. ठीक, तो उसके बाद हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास you'll be going through the other forms. ठीक है, that is the vertebrates की other groups like the Pisces, the amphibians, the reptiles, the aves and mammals. ठीक है, हम बस अग्नाथा वाली कैटेगरी को खत्म कर देते हैं and then we'll leave it here. Fine, look at it. तो basically class cyclostome જેટલા અમે કહું છે, they are all ectoparasites. They are all ectoparasites. Ectoparasites माने कौन है लारा बाबू? Those parasites which live on the other fishes. Parasites that live outside. Parasites outside the body are called ectoparasites. ठीक है, elongated body without scales and paired fins. Now इनमें similar to, they have appendages, they have fins, but the fins are not paired. ठीक है, fins are not paired. ठीक है, so elongated body worm like अच्छी देखी थी वो ना, तोड़ी फॉर एग्जाम्पल, तोड़ी देखी जो सही बड़ा देखिए. हाँ, तोड़ी बॉम्बे द फिश मार्केट में मिलता है. ठीक है, तो वो देखने में जैसे है ये भी वैसे ही. ठीक है, बट एग्जैक्टली तोड़ी इज अ फिश, इट इज नॉट अ साइक्लोस्टोम. अग्नाथा नहीं है, उसकी जॉज है, ग्नाथोस्टोम है. हो, elongated body without scales or paired fins. तो इनकी बॉडी में there are no scales और paired fins. मतलब you can see ये इस प्रकार की ऐसी कहलाता fins. So they don't have any paired fins. Fine. यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, these are paired fins. So you can see ये इनकी बॉडी में अटैच हो गए as parasites. They are attached to the body as parasites. ठीक है, तो इनकी माउथ जो है देख रहे हो, it is circular mouth and they have this kind of gill slits exposed on the outside. So what are they doing? They attach themselves on the body of other fish, etc. or aquatic animals and absorb nutrition from their body. Hence they are ectoparasites. कहीं body भीतरे गौली परिवेनी तो बाहर ही रहिबे, therefore ectoparasites है. Okay, then you see 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. 6 से 15 pairs of gill slits होते हैं
that provide or help them in respiration. Then sucking and circular mouth without jaws, sucking and circular mouth and jaws are absent. Cartilaginous cranium and vertebral column. तो इनकी जो vertebral column है, जेहेतु जमाने vertebrata, so they will have a vertebral column, but the vertebral column would be cartilaginous in nature. ठीक है, fine. So the cranium is also, ये जो मुंडा, this cranium, ये वाली cranium, this is also cartilaginous as well as the vertebral column is also cartilaginous. ठीक है? Then mouth is the circulation is closed type. Kindly, because we are here talking of chordata. So chordata basically have a circular mouth. Chordata basically have a circular mouth. Okay. Then they are marine. They migrate for spawning to fresh water. ठीक है, ये मराइन होते हैं बट दे माइग्रेट इनटू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, इसलिए इनको हम लोग एक कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं, वी कॉल देम एनाड्रोमस. डीटी अछि होटेल एनाड्रोमस आ होटेल कैटाड्रोमस. ना फ्रेश वाटर को यदि मराइन फ्रेश को जाउछदी तो एनाड्रोमस कहलाते हैं, देन फ्रेश वाटर टू मराइन को जिबे तो कैटाड्रोमस ताको कुआजिबो. ओके, आफ्टर यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो. आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, माने छुआ देला बेलकु आफ्टर दे गिव बर्थ दे डाई. ठीक है, दे लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन. Now once they have completed spawning they would die. Only after metamorphosis the larvae would go back into the oceans. ठीक है, got the point? Okay. Now look at them. ये जो आप देख रहे हो, these are all very important example or specimen. ठीक है, in case of the they have examples अगर आप देखो तो their examples are petromycin. ठीक है, कौन है petromycin? This is petromycin. ठीक है, then the myxine or hagfish, ये आपकी myxine और hagfish है. ठीक है, fine. See, but both of them are of the same properties. खाली गोटे difference एया that petromycin is a parasite, ectoparasite. See, lagi jaye on the body of other aquatic animals, fish, etc., and absorbs blood and nutrition from it. Whereas myxine is a necrophagous. माने यदि समुद्र रे in seas and oceans you'll have any dead material, decaying material present. Suppose some organism has died, so they can eat that. So they are like scavengers. So these myxine hagfish are scavengers, whereas petromycin is parasitic. ठीक है, बुझेला? Okay. यहीं तक है आज का सेशन, because आप और the sub super class Pisces will be there. तापरे amphibians, तापरे हमारा reptilia, तापरे aves and mammals. ठीक है, वो आपकी next class में cover होगी in the full fledged. So today's session for the hemichordates, chordates, ठीक है, cephalochordates, urochordates, then the agnatha, that is cyclostomes, is complete. Fine. I hope you must have understood. Suppose you would have any doubts, you can clearly ask them. Don't be shy of asking any questions. Okay? Fine. Okay? Chalo badhiya hai bhai. And one more request to all of you. Please, diligently, sincerely join these classes, sessions, so that you will learn more, you can understand more, and even ask questions so that you can clear all your doubts. ठीक है?
चलो, थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज विंटर, विंटर में बहुत ब्यूटीफुल एलर्जीज, गैस, नो, आपकी डस्ट एलर्जीज, कोल्ड एटसेट्रा होने के चांसेस होते हैं।